Good morning, Namo Nama. Dear student, in this lecture we are going to cover bases from the chapter acid, base and salt. In the previous lecture we have studied about acids and their properties. In this lecture we are going to cover all the properties of bases. First of all, we are going to discuss about some physical or the basic properties of bases. First of all of you from the previous classes know that bases are bitter in taste and they are slippery to touch. Strong bases are also corrosive in nature. That means if they are not handled properly, they can cause burns or they can cause some reaction on our skin. Some bases dissolve in water and they form alkalis. There are two types of bases, strong bases and weak bases. The strong bases like sodium hydroxide, that is caustic soda, potassium hydroxide, that is caustic potash. These are strong bases and they are very corrosive in nature. They can burn our skin if handled carelessly. We have already discussed that some strong bases can be corrosive in nature. Normally we have soap, we have baking soda. These are not very corrosive in nature. They can be used or handled by naked hands, but usually there are many such bases that are strong bases. What happens when we dissolve a base in water? Many bases dissolve in water and they generate heat. They release heat. That means same like as in acids. When acid was mixed with water, it was an exothermic reaction. Similarly with the bases, when a base is mixed with water, it is an exothermic process, and the many bases are such that they do not dissolve properly in water. But those bases that dissolve in water or are water soluble, they are called alkalis. To understand it better, we'll do an experiment in which we are taking 20 ml of water and we added 2 to 3 or 2 to 5 NaOH pellets, and after some time when we touch the beaker, we feel hot. The beaker is warm because it is an exothermic reaction. Okay, now do alkalis, those who are soluble in water, such bases, do they conduct electricity? Yes, they conduct electricity. When we make aqueous solution of NaOH, KOH, then it conduct electricity, and because they ionize in water. What are the ions they are forming? Hydroxide ions. The reaction is given below. When we make an aqueous solution of NaOH, then what happens? It releases hydroxide ions, and which causes the basically conduction of electricity. So alkalis conduct electricity. Now let's see the indicator property of bases. All of you know that when we put a red litmus paper in a base, it turns blue. But what are the reactions of other indicators? So if we put base on in a phenolphthalein solution, it will turn pink. If we add methyl orange to a base, the base will turn yellow. And if we put methyl red, then the color will change to red. So remember, what are the different color changes in the different indicators? Red in methyl red, yellow in methyl orange, pink in phenolphthalein, and blue in litmus paper. Again, the same topic, neutralization reaction, we have read it in previous classes also, and in acids also we studied it, that whenever a base and an acid combine together or mix together, they neutralize their effect and they cause neutralization. They form salt and water. The reaction is given KOH plus HCl and it forms a salt KCl, that means potassium chloride, and water is formed. The next is the reaction of bases with certain metals. Bases do not react with all metals. Basically, they react with active metals that are reactive in nature, like zinc, aluminium, tin and lead. Now, whenever there is a reaction between a base and a metal, then which gas will be evolved? Hydrogen gas is basically evolved. The experiment that is conducted is, we have taken a test tube, we fill it with NaOH solution and we put some zinc strips or zinc granules in it, and what we see that hydrogen gas is evolved in this reaction.
that is sodium hydroxide plus zinc leads to sodium zincate formation. The salt is sodium zincate and hydrogen gas is produced. The next type of reaction is what will happen if a base is reacting with a non-metal oxide. So non-metal oxide you have previously studied, they are acidic in nature. आपने पढ़ा है पहले कि जितने भी हमारे मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, और जितने नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं. तो जब एक नॉन मेटल का ऑक्साइड रिएक्ट करता है बेस के साथ तो बेसिकली यहाँ पर भी एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और साथ में वाटर सिंथेसाइज होता है या वाटर रिलीज होता है, वाटर प्रोड्यूस होता है. यहाँ पर हम एक एक्टिविटी के द्वारा इसे देख रहे हैं. हमने यहाँ पे क्या लिया, लाइम वाटर लिया. लाइम वाटर बेसिकली क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करी. जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करी लाइम वाटर में तो क्या केमिकल फॉर्म हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी वजह से जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो गया, मिल्की हो गया. तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ों का फॉर्मेशन हुआ, वाटर का फॉर्मेशन हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट जो बेसिकली हमारा वाइट कलर का सॉल्युबल है तो वो फॉर्म हुआ जिससे पूरा सॉल्यूशन हमारा वाइट कलर का हो गया. लाइम वाटर पहले प्रीवियसली कैसा था, कलरलेस था. तो यहाँ पर हमने जो रिएक्शन देखा, आपको बेसिकली क्या ध्यान रखना है कि जब भी कोई नॉन मेटल ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सा क्या चीज़ बन रहा है इसमें, बेसिकली इसमें वाटर और सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा. नाउ दिस अ न्यू टॉपिक दैट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. ये वर्ड आपने पहले नहीं पढ़ा है, इसको पहले समझ लीजिए. व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स? बेसिकली देयर आर सम मेटल ऑक्साइड जो एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं. सम मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेसिस. एग्जाम्पल जैसे जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये ऐसे हमारे मेटल ऑक्साइड्स हैं जिनका रिएक्शन एसिड्स के साथ भी होता है और बेस के साथ भी होता है. इनको हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं. तो ऐसे ऑक्साइड्स जो एम्फोटेरिक हैं उनके साथ क्या रिएक्शन होगा ये अभी हम आगे देखते हैं. तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं बेसिस के साथ. ZnO जो हमने अभी पढ़ा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड. जब इसका रिएक्शन हुआ एक बेस के साथ NaOH के साथ तो इसने बनाया सोडियम जिंकेट सॉल्ट. कौन सा सॉल्ट बना, सोडियम जिंकेट, और वाटर रिलीज हुआ. और दूसरी तरफ जब लेड ऑक्साइड का रिएक्शन हुआ विद सोडियम हाइड्रोक्साइड देन इट अगेन फॉर्म अ सॉल्ट सोडियम प्लम्बाइट and releases water. So whenever a amphoteric oxide react with any base it will form a salt and it will release water. तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ी सारी जो हमारी बेस की प्रॉपर्टीज़ थी उनको केमिकल प्रॉपर्टी. सबसे पहले जो बेसेस हैं दे आर बिटर इन टेस्ट एंड स्लिपरी इन टच. Next point, the strong bases are corrosive in nature. Fourth point, water soluble bases are called alkalis. Then the fifth point, they conduct electricity in solution. Not all those that are alkali that can mix or that are soluble in water, they can conduct electricity. Then they give different colors and different indicators. We have read them. बेसिकली आपको ध्यान रखना है चारों तरह के इंडिकेटर्स में कौन कौन से कलर का बनेगा. उसके बाद दे रिएक्ट विद एसिड एंड दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. देन दे रिएक्ट विद सर्टेन मेटल्स टू गिव हाइड्रोजन गैस. दे ऑल्सो रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. And the amphoteric oxides react with bases to form salt and water again.